And here's a news break that shames the ecosystem completely and gives them a reality check, a rude shock. The likes of Tejasvi Yadav, PL Punia, Ram Gopal Yadav, who blamed the media and said that, look, Atiq Ahmed was a creation of the media. Media made him a mafia don and gangster, that he didn't actually do anything. And then he also said, kabhi kabhi kuch ghatnaएं ho jati hai. We have accessed chats, WhatsApp chats that are on your screen, and these are chats while this man was inside the jail. And look at the messages he's sending. He's threatening people even when he's inside jail. This is the real Atiq Ahmed that the lobby is today trying to whitewash. The date of the chat is 7th Jan 2023. So this is not, let no one tell you that these are chats from some 20 years ago. What's written in these chats? He's threatening a builder and says, Sabka Hisab Hoga. And if you zoom in, and I'll try and read this, it says, मुस्लिम साहब पूरे इलाहाबाद में बहुतों ने हमसे फायदा उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे घर ने उठाया. आज हमारे खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हैं और पुलिस के शय में काम कर रहे हैं. पुलिस ने शय देना बंद कर दिया है. This is just one conversation. There are more. Amir Haq is now joining us live. Amir, congratulations first of all on getting this super news break. This demolishes the argument of the ecosystem that was trying to paint Atiq Ahmed as some kind of a messiah. And it is quite evident the tactics that Atiq Ahmed and his gang used to, subjugate or, oppress other such people who actually happen to earn some money. And, all such people were directly approached through either henchmen, associates and aides of Atiq Ahmed, or they were approached through, phone calls and WhatsApp chats. But, look at the daring with which Atiq Ahmed used to approach his victims, that he's writing this in a WhatsApp chat. This complete conversation brings out the fact that he had no fear of. And imagine, this is a mafia who's been languishing in jail outside his state in Gujarat for the last 5 years, and despite all of that and the kind of strict crackdown that the Yogi government has been doing against him, he still was trying to threaten people from inside the jail. And if you look down closely on the chat, towards the end he writes Atiq Ahmed from Sabarmati jail. So he clearly was using his complete clout in order to approach his victims, to threaten them, to intimidate them and to extort money out of them. And there are a number of such victims who are coming out after his murder in Prayagraj itself to narrate their tale of woes and how they were pressurized into yielding before the gang. Also the fact that Atiq Ahmed says that, give money to my sons. My sons are not going to become doctors, engineers or lawyers. They need money to further their criminal interest, to contest election. And perhaps since this chat comes in from January, perhaps he was preparing for the local body elections, to field his candidates, to back his candidates and to finance them to, contest elections. He needed money. And in fact, we know through our sources that Mohammed Muslim, this particular builder from Lucknow, had actually coughed up rupees 80 lakh to Atiq Ahmed in order to satisfy his urges and in order to save himself. Atiq Ahmed in this WhatsApp chat gives a very pointed warning to him. And that because you're talking about the chats, and the chats are really the focus, Amir. Let's break it down. Deepak S. Kumar, our colleague, now joining us on the big screen. Deepak, take it away. Let's deep dive into this chat. Pranesh, now after Atiq was killed,
Now we have these WhatsApp chats. We even told our viewers how Atiq was the kingpin of gang number 227, which had 16 companies, and now we also get to know about his modus operandi, about how he ran an extortion racket from jail. Now these are the WhatsApp chats by Atiq Ahmed, and viewers must understand that these messages were sent from the jail where Atiq Ahmed was lodged. Now if I could read, he says, Muslim Saab, पूरे इलाहाबाद में बहुत ने हमसे फ़ायदा उठाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हारे घर ने उठाया है. And here there are abusive languages or abusive words used by Atiq Ahmed, for which we have to blur them. And he has said that लोग हमारे खिलाफ FIR लिखा रहे हैं और पुलिस के शाये में काम कर रहे हैं, which means that people have raised their voice against me and they are working under the shelter of the police. And in the next chat you can see here how he goes on to say कि मेरे लड़के ना डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा और सिर्फ हिसाब होना है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हिसाब शुरू कर दूंगा. जहां तक आपका घर है, घर में कोई जान मारने लायक नहीं है, लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं आपसे, अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम का ससुर, ये तीन लोग पेट भर मार खाएंगे. मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं. ईडी ने अभी आपका पैसे सीज तो किया नहीं, बेहतर है कि हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है वो हमने इलेक्शन में जरूरत है. हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं, आपके घर ने अपनी किस्मत और अकल से कमाया, लेकिन हमारे जो पैसे हैं उसको तुरंत दे दे तो इस वक्त हमारे बहुत काम आएगा और शायद आपके तरफ से ध्यान हट जाए. That means it goes on to show how Atiq Ahmed had threatened this builder called Muslim, and he extorted money from him, and he said that, you know, if you give us the money, we will not pester you anymore. And he also went on to say, like I mentioned in the chat, that his son was not out to become a doctor or a lawyer, but to run his father's crime syndicate. And this chat clearly goes on to show exactly that, Pranesh. Now there's also a part, and I'll give you time so that you figure it out where that portion is, where it says Sabka Hisab Hoga. Now those three words are so important because it tells you about this man's mindset. Amir. Well, that's right, Pranesh, and he clearly wasn't down and out. At least he was not ready to concede so, despite of the fact that he was sent away from the Devariya jail in eastern UP. And you would remember that in Devariya jail in 2017, he kidnapped a businessman from Lucknow and had his aides, his associates, bring him about 350 kilometers away inside Devariya jail where he was lodged. And then this businessman from Lucknow was actually tortured. His fingers were broken by Atiq Ahmed himself to show not just to this businessman. What are your thoughts? We have a reaction from the Samajwadi Party, and senior leader of the Samajwadi Party, IP Singh ji, is joining us. IP Singh sahab, good morning. These are WhatsApp chats 7 जनवरी 2023, इसी साल 7 जनवरी के ये व्हाट्सएप चैट्स हैं. अतीक अहमद एक बिल्डर को धमकी दे रहे हैं व्हाट्सएप पे और वो कह रहे हैं कि सबका हिसाब होगा. और राम गोपाल यादव कहते हैं कि ये तो मीडिया ने बनाया, अतीक अहमद कोई गैंगस्टर या डॉन नहीं था. देखिए, अतीक अहमद की बात छोड़ दीजिए, सवाल कानून का है. क्या हत्या का बदला हत्या है? जिस तरह से साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई, रात के 10 बजे हथकड़ी डाल के लेकर चल रही थी. 4 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, भाई भी विधायक. ठीक है, ये काम कानून नहीं, एक मिनट देखिए आईपी सिंह जी, अब मेरी बात सुन लीजिए. मैं बस एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको पूरा समय दूंगा बोलने का, बस एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं. देखिए, आपने बोला कि अतीक अहमद की बात छोड़ दीजिए, तो मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर आपने 2-3 पंक्तियों के बाद आपने कहा 3-4 बार का विधायक, 1 बार का सांसद. आप तो कर रहे हैं अतीक अहमद की बात, तो सांसद विधायक अतीक अहमद की बात आप करेंगे, लेकिन माफिया डॉन गैंगस्टर अतीक अहमद की बात आप नहीं करना चाहते. ये क्या मतलब है सर? अब बोलने देंगे मुझे? बोलिए सर. सबसे बड़े बड़े शूटर गब्बर सिंह मुख्यमंत्री को मंच पर बुके देता है, उन्हें गिफ्ट देता है.
एक सबसे बड़ा माफिया पूर्वांचल का बगल में बैठ के कॉफी की चुस्कियां लेता, उसकी पब्लिक डोमेन में उसकी फोटो आती है। ऐसे 70-80 गैंगस्टर हैं, उनसे बड़े अपराधी, उनके खिलाफ सरकार ने क्या किया? उन्नाव में रेप पीड़िता की बहन और 7 माह की बेटी को जला के मौत घाट पहुंचा दिया गया। कल आप जालौन में देखा एक बेटी को दिन दहाड़े गोलियों से उसको भून दिया गया। 7 ब्रूटल मर्डर, 4 जनपद बाधा में हुआ, 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में ब्रूटल मर्डर हुआ, गला रेत कर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश तो जंगल राज हो गया है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है। तालिबान बीजेपी आप उस पर नहीं करते, करदाता सरकार को सरकार ने मरवा दिया। सरकार तो अपराधियों को बिठाकर गाड़ी में लेकर गई थी। एक काम फांसी देने का काम अदालतों का है। सिंह जी, आईपी सिंह जी, देखिए आप एक सवाल पूछा मैंने अतीक अहमद से, आप तो बिल्कुल ही भावुक हो गए, गुस्सा ही हो गए आप तो। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, जो आपका ये पॉइंट है कि क्या किसी ने हत्या की तो उसकी सजा हत्या होनी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं, वो नहीं होनी चाहिए। जो अतीक अहमद के साथ हुआ उसकी जांच हो, और जो भी इसके पीछे वो गलत हो, उनकी गोली मार के हत्या की गई पुलिस कस्टडी में, वो गलत है, फेलियर है ये पुलिस का। लेकिन बात यह है जो रामगोपाल यादव कह रहे हैं, आपके बड़े नेता, कि कोई गैंगस्टर नहीं था। ये देखिए गैंगस्टर का सच्चा चेहरा। 7 जनवरी 2023 को अगर एक आदमी कह रहा है कि तुम मुझे पैसे दो नहीं तो सबका हिसाब होगा। बताइए, 9 साल से सरकार केंद्र में बीजेपी की है, 6 वर्षों से सरकार बीजेपी की है। आखिर ये सब कैसे चल रहा था? जो कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, उस उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि देश में सबसे ज्यादा। ऑडियो आपकी खराब हो रही है आईपी सिंह जी, ऑडियो लाइन में शायद दिक्कत है। हम वापस कनेक्ट करेंगे आपसे और आपसे फिर से वही सवाल पूछेंगे, और हम